So we'll talk about the Gandhi. He was from 1869 to 1948. So if we have to introduce him, we can say he is rightly called as Mahatma. He is the second most popular personality after Jesus Christ. As per the Time magazine survey के बाद, he is the second most popular personality after the Jesus Christ. So Gandhi के जो ideas हैं, they are very scattered and they denied the existence of any school of thought like Gandhiism. Gandhi described himself as a man of action. He described himself as a man of action. He never claimed that he knows the ultimate truth. He never claimed that he knows the ultimate truth. He described his life as an experiment truth. He never claimed that he knows the ultimate truth, but he describes his life as his experiment with the truth. इनके काफ़ी आइडिया स्कैटर्ड हैं. तो प्रोफेसर हुमायूं कबीर क्या बोलते हैं? गांधी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर इन द कन्वेंशनल सेंस. ही कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर इन द कन्वेंशनल सेंस अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हुमायूं कबीर. But according to Bipin Chandra, psychologist, master of strategy, an exceptional politician. According to Bipin Chandra, Gandhi was a psychologist, master of strategy, and exceptional politician. So he was a psychologist, master of strategy. बहुत अच्छे से strategy बनाते थे. So he was expert कि कब किस चीज़ को start करना है, ख़त्म करना है. And he was an exceptional politician. So even though Gandhi denied the existence of Gandhiism, there are the people who consider themselves as Gandhians, and hence we cannot say that Gandhism as a school of thought does not exist. So अगर influence की बात करें तो influence of Gandhi, the biggest influence of Gandhi is the mother of who was extremely religious. सबसे ज़्यादा influence होता है गांधी पे influence था उनके mother का, and she was very extremely religious. The biggest influence of Gandhi is of his mother who was extremely religious. Gandhi is inspired by various religions like Vaishnavism, Jainism and Christianity, and Buddhism भी आ जाएगा. So he was influenced by Leo Tolstoy, John Ruskin and Edward Carpenter. So if we talk about the school of thought, as far as his epistemology is concerned, he can be called as a postmodernist, and as far as political philosophy is considered, we can call him as a moral anarchist. वो stateless society चाहते थे, तो he was a moral anarchist. तो epistemology मतलब theory, किस theory में डाल सकते हैं? So epistemology means theory of knowledge. So if we, as far as epistemology is concerned, he can be called as a postmodernist. As far as political philosophy is considered, we can call him as a moral anarchist. The thought of Gandhi, one is non-violence, then satyagraha. And what is Gandhi's thought on Swaraj? What is the Gandhi concept of Sarvodaya? And what is the thought of Gandhi? His was critic of modern civilization, and his theory of end and means, and his views on rights and duties, and his views on state democracy and women education. So first thought of Gandhi is of non-violence. It is a fundamental principle of Gandhiism. For Gandhi, non-violence is the article of faith or matter of religion. It's an article of faith or matter of religion. So Jesus Christ से भी प्रभावित थे. According to Gandhi, the objective of life is to understand the truth of God. The objective of the life is to understand the truth or God. मतलब या तो भगवान को जानना है, सच्चे को जानना, वो ऑब्जेक्टिव है. या तो ट्रुथ को जान लो या भगवान को जान लो. तो नॉन वायलेंस है, जैसे लव है, एंड वायलेंस क्या हो जाएगा? आप मटेरियलिस्टिक डिज़ायर रख रहे हो या आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, सो इट्स अ नॉन वायलेंस. मटेरियलिस्टिक कल्चर को फॉलो कर रहे हो, ये भी एक तरीके का नॉन वायलेंस है. सो गांधी बिलीव्ड इन द कंटिन्यूटी ऑफ एंड एंड मीन्स. इट इज़ इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ टू अटेन द गुड गॉड, दैट मीन्स कैन नॉट बी दोज ऑफ शैतान. द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ टू अटेन द गॉड देन कैन नॉट मीन्स शैतान के नहीं हो सकते अगर आपको गॉड को जानना है तो. So he was influenced by Jesus Christ. Jesus Christ was a symbol of love and humanity. So according to Gandhi, he cannot tell what is the ultimate truth. However, he was sure that ahimsa is the path or the way of the life to be followed if one wants to understand the good. If one wants to understand the God, then we'll have to follow the path of ahimsa. So hinsa की बात करें, according to Gandhi, hinsa belongs to the world of animal because either the soul is sleeping or underdeveloped. एनिमल्स का होता है जो ह्यूमन नॉन वायलेंस नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो रूल ऑफ हिंसा इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन हैव सोल एंड रीजन. और अगर आप दूसरों को वायलेंस कर रहे हो, मतलब उसका जो पार्ट है वो आप में ही है, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर अपलिफ्टमेंट, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. सो अकॉर्डिंग टू गांधी, अहिंसा शुड नॉट बी अंडरस्टूड इन द लिमिटेड सेंस ऑफ नॉन कमिटिंग वायलेंस. अहिंसा इज बेस्ड ऑन फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए. ये इसको मारेगा तो उसको भी तो लगेगी. फिर अहिंसा, ओनली अहिंसा इज अ सोर्स ऑफ पीस. अकॉर्डिंग टू गांधी, ओनली वन हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ समबडी इज माई एनमी इज द पार्ट ऑफ माई सेल्फ. आई हैव टू रेक्टिफाई माई सेल्फ.
So according to Gandhi, nobody can hurt the other person without hurting himself. Nobody can disregard the other person without disregarding himself. Thus, ahimsa is linked to the concept of human dignity. Gandhi suggested to observe ahimsa in thoughts, speech and actions. So talk about the Gandhi method of satyagraha. Satyagraha is the political technique of Gandhi. Gandhi movements are called satyagraha. Gandhi has developed the technique of satyagraha as a method of protest in South Africa. In India, he deployed this technique, the first at local level like Champaran, Kheda, and later on all India level. He has kept on experimenting and perfecting the technique. He kept on experimenting and perfecting the technique of satyagraha. So one of the best example of Gandhi satyagraha was civil disobedience movement. He will have employed both mass satyagraha as well as individual satyagraha. So how passive resistance of Aurobindo Ghosh is different from Gandhi idea of satyagraha. So Gandhi has differentiated between satyagraha and passive resistance. So सत्याग्रह में तो मैटर ऑफ फेथ एंड नॉन वायलेंस, कोर में है नॉन वायलेंस. पैसिव रेजिस्टेंस में भी नॉन वायलेंस है, लेकिन सत्याग्रह का कोर है. सो इन अकॉर्डिंग गांधी, इन पैसिव रेजिस्टेंस पर्सन मे नॉट बी यूजिंग फोर्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. पैसिव रेजिस्टेंस में बंदा फोर्स यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास अभी फोर्स है नहीं, ठीक है, अभी कमज़ोर है. हाउएवर फॉर सत्याग्रह नॉन वायलेंस इज अ आर्टिकल ऑफ फेथ. चाहे आपके पास स्ट्रेंथ हो या ना हो, आपको नॉन वायलेंस रखना है, इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ. सो लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस में वो मैटर ऑफ फेथ नहीं है. जो पैसिव रेजिस्टेंस में पर्सन काम कर रहा है वो इसलिए यूज़ नहीं कर रहा है बिकॉज वहाँ पे अभी इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है वायलेंस करने की. पैसिव रेजिस्टेंस में पर्सन में थिंक दैट द अदर पर्सन इज एन एनिमी, बट हाउएवर देयर इज नो एनिमी इन द सत्याग्रह. ही इज अगेंस्ट द एविल एंड नॉट अगेंस्ट द एविल डूअर. मतलब सामने वाले से पर्सन से दिक्कत नहीं है, उसके जो एविल है उसके अंदर, उससे दिक्कत है. तो सत्याग्रह हैज़ द फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड रेदर देन एनमिटी. तो सत्याग्रही जो होता है दुश्मन के लिए भी लव एंड ब्रदरहुड रखता है और सामने वाले बंदे से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर की बुराइयों से प्रॉब्लम है. सो गांधी बोलते हैं कि मॉरली जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वही सत्याग्रह कर सकता है, ना कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन. सो दस नॉन वायलेंस इज द हार्ट ऑफ द सत्याग्रही. सत्याग्रह इज अ बैटल बिटवीन गुड एंड एविल एंड हेंस मीन्स एंड एंड शुड हैव द कॉन्टिन्यूटी. गांधी बोलते कायरता एंड वायलेंस में अगर कुछ चूज़ करना पड़े तो वायलेंस चूज़ करेंगे, कायरता तो और ही ज़्यादा बुरी है. So according to Gandhi, satyagraha is a weapon of strong rather than a weapon of weak. So it is the weapon of those who are spiritually strong and not just physically strong. Gandhi has clarified that satyagrahi should not equate it with the cowardice. Gandhi held that between violence and being coward, he will choose violence. So why Gandhi used satyagraha? Because Gandhi was a great politician. He was in the habit of giving larger than life view of whatever he used to do. He was a habit of giving larger than the life view of whatever he used to do. So when he called the Indian freedom struggle satyagraha, for freedom struggle was not just any other fight. It started looking extraordinary. It got spiritualized. It became the battle between good and evil. कुछ बोलते हैं आज सत्याग्रह यूज़ कर सकते हैं. आज बोलते हैं डेमोक्रेसी, जुडिशरी, कोई भी शिकायत हो आप जुडिशरी के पास जाओ, गवर्नमेंट के पास जाओ. और कुछ लोग बोलते हैं कि जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग रहते हैं और 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो अकाउंटेबल ठहराना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सत्याग्रह इज़ अ गुड टूल इवन टुडे. कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हमें सत्याग्रह नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज अभी क्या है, अभी हमारी जो डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, अगर सत्याग्रह ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारी जो जड़ें हैं डेमोक्रेसी वो कमज़ोर पड़ जाएंगे. सो वाई गांधी हैज़ यूज सत्याग्रह? इट बिकम धर्म युद्ध. गांधी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट दैट द फाइट इज फॉर द ट्रुथ, फॉर द राइट कॉज एंड हेल्स अल्टीमेटली इंडियंस आर गोइंग टू विन. So what is the Gandhi concept of Swaraj? Swaraj is an Indian version of liberty, and Swaraj has been the goal of freedom struggle. For the earlier leaders, Swaraj was the self-rule under the British state or dominion. It was Aurobindo Ghosh who gave the concept of Purna Swaraj. Who gave the concept of Purna Swaraj? Aurobindo Ghosh. So Aurobindo has influenced Gandhi's concept of Swaraj. For Swaraj मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना, बट जो गरीब से गरीब है उसे लाइफ ऑफ डिग्निटी प्रोवाइड करना. तो अकॉर्डिंग गांधी ब्रिटिशर्स को हटाना, ख़त्म करना, ब्रिटिश रूल ख़त्म करना इट जस्ट ओनली मीन्स टू अचीव स्वराज. इसे ख़त्म करना ज़रूरी है अगर हमें स्वराज चाहिए, अगर हमें अपलिफ्ट करना है. लेकिन रियल स्वराज कब आएगा? सो रियल स्वराज जब आएगा जब वी प्रोवाइड डिग्निटी टू द डाउन ट्रेडेड पीपल और अंत्योदय पीपल, that is poorest to the people, poorest of the poor people. For Gandhi, Swaraj was not just liberation of the foreign rule. For Gandhi, the end of the foreign rule was just a means and not the end. And Gandhi Swaraj was not to be seen as a transfer of power from one set of ruler to another. So Swaraj meant giving the life of dignity to the poorest of poor. To give life of dignity, we have to address mass poverty. Only way to address mass poverty is democratic decentralization. So Gandhi बात कर रहे थे ग्रास रूट लेवल पे पावर होनी चाहिए.
तो गांधी बोलते थे जैसे एक रिपल्स, पत्थर फेंकोगे एक रिपल्स दूसरे रिपल्स को पावर देती है, वैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को पावर देगा। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। तो गांधी टॉक्स अबाउट राम राज्य मीन्स स्टेटलेस सोसाइटी, और जब पावर लोगों के पास हो एक्सप्लॉयटेशन के लिए ना, ओके एक बंदा दूसरे को एक्सप्लॉयट करे, बट एक बंदा दूसरे को एम्पावर करे, इट शुड बी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ अदर्स। सो गांधी एम वॉज टू एस्टैब्लिश राम राज्य, दैट इज़ राम राज्य। तो वेस्टर्न सोसाइटी में राम राज्य क्या है कि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन कम हो, फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, बट इंडिया में राम राज्य का मतलब ये नहीं है। इंडिया में है राम राज्य की स्टेट हो ही ना, इट इज़ अ स्टेटलेस सोसाइटी। एम राज राज्य सोसाइटी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ओशनिक सर्किल ऑफ पावर, ओशनिक सर्किल ऑफ पावर, इस तरीके से एक बंदा दूसरे को पावर दे, एंड हेयर द इंडिविजुअल इज एट द सेंटर। सो अकॉर्डिंग टू गांधी स्टेट इज द सिंबल ऑफ वीकनेस ऑफ मैन। जैसे बुद्धिज्म में क्या आया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तो क्या हुआ, लोग लालची हो गए, एक दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने लगे, तो वहाँ पे स्टेट का कंसेप्ट आता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें गैदर करने की कोशिश करें, वहाँ पे पुलिस का कंसेप्ट आता है, जहाँ पे पुलिस होगी, जहाँ पे आर्मी होगी, वहाँ पे क्या होगा, वायलेंस। सो अनलाइक वेस्ट वेयर द फ्रीडम मीन्स एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, so Raja means putting restriction. Man achieves Raj only when he is able to control his desire, hence self-control will eliminate the need of the state. So Gandhi has described Raj in different dimension, so at the individual level, which means self-control. So in Swaraj in political space means democratic decentralization. Economic Swaraj means economic recognition of the society to fulfill the basic need instead of mass production. So Gandhi suggested production by masses. He suggested a revival of cottage industry and lend to the tillers. Social Swaraj means ending untouchability and communal violence. So culture Swaraj means Gandhi suggested that one should accept the good things from all the culture and religion without being uprooted by them. So it will not respect, if a culture is not respect our culture, would not respect, because culture is our identity. If we will not respect our culture, world will not respect, because culture is our identity. If we will not respect our culture, how the world will respect our culture? Culture is our identity. तो बोला एक कल्चर जो दूसरे से सीखना नहीं चाहता है, वो एक तरीके से बंद घर की तरह, जहाँ पे खिड़की नहीं है हवा आने के लिए। तो बात करते हैं गांधी की सोशलिज्म की। सो गांधी डज नॉट फेवर इक्वल पे फॉर द ऑल द वर्क, गांधी सजेस्टेड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल वर्क। लाइक रस्किन बॉन्ड, गांधी सजेस्टेड दैट the work of the barber is as important as a lawyer. Both the workers deserves equal respect. His concept is bread labor, that is associated with the idea of dignity of the labor. कि आपको bread labor मतलब कुछ ना कुछ मजदूरी करनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो लेबर है कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, उसे कितना पेन होता है। So what is the concept of bread labor? The gospel of work. So idea is that every person should perform some of the physical labor. Why? This is why we can understand the pain and hardship of those who perform manual labor. So why this is the way we can develop the respect for manual labor. Gandhi Sarvodaya aim at giving the life of dignity to the masses, and hence it is a major component of Gandhi constructive program. So Gandhi has proposed land reforms, that is means the land to the tillers. Second one is the revival of cottage industry. Suggests the promotion of Gandhi favored production of masses rather than mass production. Unlike Marx, who suggested the violent overthrow of capitalism, Gandhi suggested trusteeship. He appealed to respect for manual labor. Capitalists should consider themselves as trustees of the capital rather than the owner of the capital. Gandhi believed that capital is a social production, hence the capitalist should keep what is required for running the industry. So what is enough for the personal use and should contribute the remaining part of the well-being to the society. One of the principles of the Gandhi was that there is not enough for everybody need, but there is enough for everybody's need, but not enough for the greed. तो जो नफरत है जो वर्कर्स की कैपिटलिस्ट क्लास के प्रति, वो खत्म हो जाएगी एंड वहाँ पे क्लास कोऑपरेशन देखने को मिलेगा. सो गांधी क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस का आता है एडवर्ड कारपेंटियर. सो ही हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो इन्होंने बताया था कि स्टडीज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है. So Gandhi view on modern civilization. He called modern civilization as at satanic civilization. He criticized the modern civilization not because it is Western, but because its negative consequences. Gandhi did not reject everything that is Western. So Gandhi criticized करते Western civilization का because of the negative influence. Gandhi was influenced by the idea of Socrates and Plato. Gandhi even translated Plato's dialogue in Gujarati. So he opposed because of the values of modern civilization. Okay, क्या क्या principle he opposed? Utilitarianism and materialism. So Gandhi believed that utilitarianism undermines the human dignity. It reduces a human being to the level of animal. जैसे एनिमल होता है सुअर, सुअर जो करता है कुछ अच्छा चीज़ दिखता है खा जाता है, बुरी चीज़ें फेंक देता है, वैसे ही यूटिलिटी है तो करो नहीं तो नहीं.
एथिक्स फॉलो नहीं करते. ह्यूमन बीइंग सिंपली कंज्यूमर ऑफ यूटिलिटी हैविंग नो रिगार्ड फॉर द एथिक्स. ही बिलीव दैट इंपीरियलिज्म एंड फासिज्म आर द प्रोडक्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. तो इसी यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी को पिक्स फिलॉसफी बोलते हैं, नोन एज पिक्स फिलॉसफी. तो यूटिलिटेरियनिज्म में फ़ायदा देखा जाता है, तभी इंपीरियलिज्म एंड फासिज्म आए कि जाओ इंडिया को लूटो, कितना भी लूटो, हमें फ़ायदा हो रहा है. तो यूटिलिटेरियनिज्म reduces a man to the level of animal. We do not feel exploiting the fellow human being is just for our pleasure. Utilitarianism and materialism are interlinked. Excessive materialism has negative consequences not only for the society but also for the environment. तो गांधी बोलते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलपमेंट किया जिस तरीके से, उस तरीके से हम करते हैं तो 9 और ज़्यादा अर्थ चाहिए होंगे. तो टॉक अबाउट द गांधी कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन इज नॉट विच रिड्यूसेस मैन टू द लेवल ऑफ एनिमल एंड कन्वर्ट द मैन इनटू शैतान. True civilization is what makes us a better human being. Civilization is not about satisfaction of wants, it is about the control over desire. तो अकॉर्डिंग टू गांधी सिविलाइजेशन वो नहीं है जो आपकी लाइफ बेटर बना सके, वो सिविलाइजेशन है जो आपके ऊपर आपको कंट्रोल करना सिखा सके. सो गांधी वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ मैकीलेवियन विद सेपरेट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. जैसे मैकीलेवियन विद सेपरेट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. एथिक्स को नहीं बोलते, क्योंकि पॉलिटिक्स एथिक्स के साथ नहीं चल सकती. मैकीवेली ये बोलते हैं. So he also linked colonial exploitation imperialism was to Machiavellian idea of pure power politics. So Machiavelli बोलते थे पावर एंड एथिक्स अलग है. इंडिविजुअल लेवल पे जो एथिक्स है वो पावर पॉलिटिक्स में काम नहीं करते. So Machiavelli बोलते थे एंड मानी करता है पॉलिटिक्स में, ना कि मीन्स. So why Gandhi criticized Western civilization? His critique of the Western civilization can be seen as his attempt to establish counter hegemony. It challenged the discourse of white men's burden or civilizing mission. It can be considered as a Gandhi's war of position. Because Britishers ने Indian minds पे भी hegemony establish करी, तो उसको खत्म करने के लिए. So we'll talk about the Gandhi on the ends and means. So Gandhi believed in the continuity of end and means. He was a critic of Machiavellianism with separate ends and means. Machiavelli has given the priority to the end and our means and held they justify the means. So Gandhi was aware of the negative consequences of separating ends and means. Gandhi was influenced by the Gokhale, who was trying to introduce spiritualism in politics. What was the reason Gandhi considered Gokhale as his political guru? So Gandhi held that the politics without religion ethics is like a death trap. Hence, it is the only way we can make politics legitimate. It is by bringing ethics into politics. We can also see influence of Greek thinkers like Socrates, who believed that the question of the good life cannot be separated from the good political life. Socrates भी बोलते थे अच्छी लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ अलग नहीं है, एक ही चीज़ है. So Gandhi believed the separation of the end and means is illogical. In this book, Hind Swaraj, he has written that we cannot expect rose flowers by sowing the seeds of babool. So Gandhi has applied this theory of the continuity of ends and means in the struggle of independence. Since the freedom movement was satyagraha, the path to be adopted was a part of ahimsa. बोले वायलेंस के हिसाब से, अगर वायलेंस से हम अगर आज़ादी पा भी लेते हैं वो किसी काम की नहीं होगी, हम अच्छी सोसाइटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. So what is a view of Gandhi, rights and duty? Gandhi believed in the functional interdependence of the right and duty. He was influenced by the philosophy of Gita. Gandhi emphasized nishkama karma. So according to Gita, do your duty, reward is not thy concern. So Gandhi believed that the rights are inherent in the duties performed by embryonic sense. If we perform our duty, we automatically get our rights. It is strong to think that we can enjoy rights without fulfillment of our obligation. And it is also noted that Gandhi does not sacrifice individual for the sake of the society, nor Gandhi support atomistic view of man. He give importance to the human dignity and believe in coexistence. जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे गांधी बात करते हैं इंडिविजुअल डिग्निटी की, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं. सब लोग मिलजुल के रहे, सबको ह्यूमन डिग्निटी हो, सब लोग कोएग्जिस्टेंस हो. सो ड्यूटीज़ में ही राइट्स हम आए थे, सब लोग अपने ड्यूटी करते हैं तो राइट्स पे मिल जाते हैं. So Gandhi on state. So Gandhi is an anarchist. He is influenced by Leo Tolstoy book Kingdom of God Within You. Therefore he is called as a moral anarchist. So if we talk about the Gandhian state, he believed that the state is a symbol of weakness in man. He advocates Swaraj or self-control. He called state as a soulless machine, incompatible with the principle of ahimsa. तो गांधी स्टेट को सोललेस मानते हैं, जिनमें कोई आत्मा नहीं है. तो गांधी के अकॉर्डिंग स्टेट एक सोललेस मशीन है, अहिंसा के साथ नहीं चल सकती. बिकॉज अगर स्टेट होगी तो पुलिस भी होगी, आर्मी भी होगी, वायलेंस तो होगा ही. इवन द स्मॉल स्टेट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ पुलिस और आर्मी. हिज आइडियल स्टेट इज राम राज्य एंड स्टेटलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ओशनिक सर्कल्स ऑफ पावर. Towards the Gandhi views on education. So Gandhi gave the idea of Nai Talim. So according to him, one should learn from the book of life. According to him, life is the best teacher. According to one should learn from the book of the life. According to him, life is the best teacher. He favored earn while learn. Education has to be lifelong process, and so a person should be in position to avoid education on his own
and he emphasized on vocational education. He favored the teaching of home science, nursing and forestry. Women have a special role in Gandhi's constructive program like promotion of khadi, ending untouchability. According to Gandhi, Sita and Draupadi should be the ideal women in India and they are the symbol of moral power. Ravan could not even touch Sita because of her moral strength. तो गांधी फेवर पार्टीलेस डेमोक्रेसी. वो पार्टीज को, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर किया था. सो ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर विद दैम विद अ प्रोस्टिट्यूट. सो अकॉर्डिंग टू गांधी लोगों को एम्पावर करना ज़रूरी है. सो महात्मा गांधी ऑलवेज डू द राइट थिंग इन अ जेंटल वे, यू कैन शेक द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी. Another word is forgiveness, not revenge. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. And there is simple living. You may have occasion to possess and use material things, but the secret of the life lies in never missing them. तो कम मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि आज हम अगर 4 मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़, तो हमारी आगे की जनरेशन और यूज़ करेगी, तो इट विल हैव ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनवायरमेंट. विल मूव अवे फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. क्लीनलीनेस में गांधी बोलता है व्हेन देयर इज बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोचेस गॉडलीनेस. महात्मा गांधी. तो क्लीनलीनेस बाहर भी नहीं, अंदर भी, अपने अंदर भी होनी चाहिए. तो सी गुड इन अदर्स. आई लुक ओनली टू द गुड क्वालिटीज ऑफ अ मैन, नॉट बीइंग faultless myself. I won't presume to probe into the fault of others. So is Mahatma Gandhi philosophy relevant today? So the question is, today many times we are exposed to a situation which forces us to ask a very important question: how valid or effective the ideals of Mahatma Gandhi today? So as per the United Nations, 2 things that are biggest threat to us is the violence. The whole humanity is suffering from it, and there are the severe threats of war. Terrorism has spread like endemic, and no country is safe from the menace. And climate change. So one is violence, another one is climate change. Climate change talk about degradation of environment, global warming, holes in ozone. India, one-horned rhino was found in the Punjab and other parts of but now there was around 1 lakh tigers in 1990s. We had some natural resources cleaners, for example, vultures. A sparrow are no more sing in our garden. So there are no sparrows in our garden. 1947, we got freedom, but we lost our Indian cheetah forever. So 1947, we got freedom, but we lost our Indian cheetah forever. So for a few moments, if we forget Gandhiji altogether and focus on what is going around the world, to United Nations at present, 2 things are the biggest threat to us. One is violence and other one is climate change. तो वीट क्या टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो नहीं ग्रो कर पाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वीट की प्रोडक्शन कम हो रहा है. एंड अनदर इज अनएम्प्लॉयमेंट. द डेवलपमेंट मॉडल दैट वी अडॉप्टेड इज नॉट क्रिएटिंग इनफ जॉब for the youth, and the way we are exploiting the natural resources, it is doubtful if we are leaving anything for the future generation. Places where some people have lived for generation are forced to relocate, and it was these things about the Gandhiji said, this was a blind bat race, this will certainly destroy us. दुनिया में 65% पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है, तो एवरी ईयर 10 लाख लोग मार्केट्स में आ रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ जॉब एवरी ईयर. वी नीड 10 lakh जॉब, बट वी आर एबल टू हैव 1,20,000 jobs. Only 6 to 7% of jobs are informal job where there is insurance, pension. Therefore, there is a demand of reservation is increasing. Let's talk about Gandhi model development. So, human society. It focus on human society. And Western model development focus on economy. तो किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस यहाँ पे जज की जाती है with the GDP numbers, but not with the progress of humanity. So clearly Gandhi stated that non-violence is not limited to physical non-violence. It was not limited to violence between human beings. It should be there in all spheres of life. So non-violence should be all spheres of life. Political system, divide and rule are still used today. Hate and intolerance are the tools that create fear, and fear is exploited. Economic system, fake promises and psychological marketing. So technological like smartphone are beneficial, no doubt, but they are also active and result in the family distress. Culture, stereotyping, there is a prejudice, women empowerment, and there is a problem of caste system in culture. वुमेन एम्पावरमेंट अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वुमेन का वायलेंस और ये सब कौन करता है, मैन करता है. तो सेम स्पीसीज़ के लोग एक दूसरे को जैसे मैन वुमेन को सब्जुगेट कर रहा है एंड ऑल दैट. सो वी नीड अ न्यू मैन दैट for that talks about equality, women empowerment, also believe in it and also work on it. So economic policy of Gandhiji, it is a misconception that he was anti-technology. Charkha in fact was a technological product. Decentralized manufacturing, maximum population living in the rural areas. If ground nuts are produced at the village level, then extracting oil from them should take place over there. This will add value to the raw material and bring prosperity for countryside. Migration from the rural area to urban area will come down, eventually stop. Presumably, people will live a happy life with their families. He was for those machines and technology that do not make human hands useless.
At the same time, machines should give sense of joy to the person operating it. Today, robots and machines are replacing human beings. This is creating a sort of unrest in the society. So machines and robots are replacing the human being, and this is creating an unrest in the society. High-end machine are centralizing product. So high-end machine है वो क्या करें, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग को सेंट्रलाइज करें. हाई-एंड मशीन आर सेंट्रलाइजिंग प्रोडक्ट प्रोसेसिंग. सो हाई-एंड मशीन्स आर सेंट्रलाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी. गांधी भी साइकिल चलाते थे, चरखा चलाते थे. टेक्सटाइल है वो भी मैन्युफैक्चर होता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. तो गांधी चाहते हैं कि जो वैल्यूडेशन है वो गाँव के लेवल पे ही हो, कि गाँव का ही प्रॉस्पेरिटी बढ़े. रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो भी कम होगा. तो इन 1972 अर्ने नासेस अ नॉर्वेजियन फिलोसफर थे ड्यूरिंग द थर्ड वर्ल्ड फ्यूचर कांग्रेस दैट सेड दैट इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी. तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था इकोसॉफी, ये मतलब हमें इकोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छे से रहना है. सो नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स हैव द राइट टू लाइफ एंड नो वन कैन स्नैच इट अवे फ्रॉम देम. ही बिलीव दैट द want of huge lifestyle is putting immense pressure on the nature. For a happy society, only high GDP are not enough. United Nations में 2 October as a International Non-Violence Day, United Nations observe 2 October as a International Non-Violence Day. This organization has recognized the era of violence through which the world is going through and can only end if we take the path shown by the Mahatma Gandhi. तो हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि लोग सोने के लिए पिल्स लेते हैं, so कहीं मेंटल पीस नहीं है. So we have a tradition of worshipping individual and country. Buddha, he was strongly opposed to the practice of worshipping. In fact, he emphasized on reasoning and logic. Mahavira, he preached us to be in tune with nature. And his birthday, Bhagat Singh, his birthday is marked with many meaningless rituals, functions, tributes, garlands, speeches and whatnot. Just the kind of things the great revolutionary would have scoffed at. Scoffed at मतलब stupid बोला हो गया, इसको स्टूपिड बोला हुआ कि ये फालतू की रेडिकुलस काम मत करो. लेकिन आज सब लोग वही काम कर रहे हैं. वी टॉक अबाउट दैट. जो भगत सिंह के टाइम, भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे काम होते हैं, लेकिन उन सबको स्कॉप्ड एट, मतलब उन सबको नहीं बोला है. गांधी जी, आवर डेफिनेशन ऑफ द रिवॉल्यूशन इज लिमिटेड. रिवॉल्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू वेपन एंड फाइट, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. तो रिवॉल्यूशन इज वे ऑफ लाइफ. ही नेवर सेड दैट डू व्हाट आई से. इन फैक्ट ही इंस्टेटेड all to search for the truth. I mean, he was searching for himself, he was searching for the truth. So we should not make Gandhi as a showpiece of temple. We should not make Gandhi as a showpiece of temple. And we should take his work all together at new level. We should take his work all together at new level. So Gandhi idea we talk about the so religion, ethics, doctrine of touchship, culture transformation, truth and violence. तो आज भी पॉलिटिशियन अपने आप को मॉरली राइट करेक्ट करने के लिए गांधी जी का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग सोचते हैं गांधी के आइडियाज़ गलत हैं. तो गांधी बोलते थे पॉलिटिक्स में रिलीजन होना चाहिए. इसको लोगों ने गलत समझा, लेकिन गांधी का बोला हर रिलीजन अच्छी बातें सिखाता है, तो पॉलिटिक्स में अच्छी बातें आनी चाहिए. तो आज पॉलिटिक्स में रिलीजन है, लेकिन रिलीजन आज पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं. तो गांधी ने बोला था एक कल्चर को दूसरे कल्चर से सीखना चाहिए, कि एक कल्चर रुक ना जाए, तो दूसरे कल्चर से सीखना चाहिए. तो गांधी चाहते थे कि मेरा घर हो, मेरे घर में खिड़की दरवाजे हो, लेकिन मेरा घर ऐसा ना हो कि एक जगह उड़ के दूसरी जगह चला जाए. मैं अपने ही कल्चर को रिस्पेक्ट करूँ, दूसरे कल्चर से भी लर्न करूँ. तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, कि जो पैसा होल्ड किए हैं इतने कॉर्पोरेट्स, उनको लोगों के ट्रस्टी की तरह होल्ड किया गया है, उन लोगों को देना चाहिए. यहीं से कंसेप्ट आता है CSR. उन्होंने बोला पर्सन से नफरत मत करो, उसके एविल से नफरत करो. तो वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं कि आप किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, मेंटल नॉन वायलेंस भी है. को ब्रदरहुड एंड सबको प्यार करो, लव एंड ब्रदरहुड प्रमोट करो, ये भी नॉन वायलेंस है. तो गांधी ने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी, और हर एक लेबर को एक तरीके से डिग्निटी मिलनी चाहिए. तो नेशनल मंडेला हो, दलाई लामा हो या मार्टिन लूथर किंग हो, इन सब ने गांधी जी के कंसेप्ट को यूज़ किया. जैसे एक्सटेंशन रिबेलियन जो चल रहा है यूरोप में एनवायरमेंट के लिए, वहाँ पे भी गांधी का यूज़ किया जा रहा है. तो गांधी का आइडिया पॉलिटिक्स में रिलीजन होना चाहिए, इसको मिसयूज़ किया गया पार्टी ने. गांधी का आइडिया था कि रिलीजन की अच्छी बातें होनी चाहिए पॉलिटिक्स में. पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे भी गांधी का आइडिया वायलेंस, तो मटेरियलिस्टिक कल्चर से दूर भागो. फिर वायलेंस आज जितनी जगह हो रहा है, वहाँ पे गांधी का आइडिया इंपॉर्टेंट है. स्वराज, आज भी जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, सबका डेटा रखती है, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा. तो स्वराज मतलब हर एक बंदा अपना ही राज करे. फिर CSR गांधी के कंसेप्ट से आता है.